Right, so the Pakistan terror plot that has now been busted while explosives that have been recovered in Jammu, and this is near the Batra hospital where this recovery has been made. Pradeep Datta has been reporting live from the area there, and in all probability the IED, Pratibha, will be taken away by the security forces and will be diffused in a safer place. That's right. Another terror plot that has been busted with IED being found very close to a hospital. Let's go across to Pradeep Datta to take us through more details. Pradeep? See, right now I'm here on Sidra Road. One thing is quite clear, that Jammu is on terror radar. On 2nd of April, we saw that how Jaish-e-Mohammed suicide bombers, they tried to barge inside army installation in Sundra area. Both of them were eliminated. That time they wanted to scuttle peace and also disrupt Prime Minister's program. And now today, improvised explosive device has been planted on roadside. And right now you can see, area has been properly cordoned. The area is cordoned and nobody is allowed to move beyond this point. Bomb disposal squad, that yellow vehicle which you are seeing, this brought in the bomb disposal squad here. The bomb disposal squad is already there on spot. They are planning to detonate this improvised explosive device. It was short while back when the police got the information about this IED. They came out to this place. They saw that there was a substance, wire was coming out. That this road is normally used by army. This is used by security forces, and nearby there is a hospital. That clearly shows that they are least concerned about the people, because this road is normally used by the civilians also. Had this IED exploded, it would have led to a lot of casualty in this area. Short while back, they have detonated one of the explosive device. There was a big explosion here that almost shook entire earth. Now you can see there are police personnel, there are bomb disposal squad people. They are assessing situation on ground. In the past, we have seen that such IEDs are normally used on areas close to Rajouri, area close to Poonch, or even in Kashmir Valley. But this after a long time, when the area in the outskirts of Jammu city has been targeted by the terrorists, where they wanted to plant an IED, they wanted to inflict heavy casualty. Reason being, for quite some time, Pakistan is making desperate attempts. Security forces continue to dominate a scene. It is not easy for them to match might of Indian army and have a direct confrontation. Whenever they had direct confrontation, most of the time we have seen the terrorists have been eliminated. And this is one of the reasons that now they are resorting to this technique, because IED is something, this explosive device, without direct confrontation, they can inflict casualty. So they are resorting to this kind of tactics. For the benefit of our viewers, just explain to us the pictures around you. We're looking at the forces there that have been deployed. How far are you exactly from the site where this IED that has been recovered, and what happens now? See, I am just only 60 to 70 meters away from the spot. Let me show you. I'll ask my VJ to pan towards that area. You will find a large number of police personnel standing there. There is a yellow vehicle. There is a bomb disposal squad. They are properly caught in this area. Normally, this road is abuzz with activity. There's hardly a moment when the traffic is not moving on this road. This route is used by army. This route is used by security force personnel. This is used by the civilians also, because nearby is Batra Hospital. Acharya Shri Chandra Hospital is nearby. So normally people come out to this place for treatment, and that's one of the reasons that it seems the terrorists have planted this IED. They wanted to inflict heavy casualty either of the civilians or security force personnel or army personnel. So they are trying to basically criminalize atmosphere. That's one of the reasons that they are targeting Jammu. Last year also, one IED was recovered from a Lashkar terrorist. He had come from Kashmir Valley. He was putting up in Bhatindi area. Bhatindi is normally a place which is being used as shelter house and transit point by terrorists. And that time they had averted tragedy. That person was arrested. And this time also, IED, the moment the police got information about improvised explosive device, they saw a suspicious substance. Maybe some locals informed them they saw suspicious substance with a wire coming out. They immediately cordoned the area without wasting time. They came over to this place. They cordoned that area. You can see the cops are deployed here. The cops are there also. So now what you can see, that short while back they detonated this IED. This is the PCR vehicle of bomb disposal squad. They are the one who risked their lives. They are the one who risked their lives to ensure that at any cost they have to prevent any kind of casualty. Let me move towards the senior police
Officers are there on spot. They are assessing situation. This is the point. Let me show you. This is the point. This is the point where IED was planted. We are just a few meters away from the point where IED was planted. Immediately police cordoned this area. They did not allow people to come nearby. They saw that wire coming out. Short while back, the bomb disposal squad had been able to avert major tragedy. They risked their lives. See how our brave hearts are risking their life. They detonated this IED that was planted here with an intention to cause heavy casualty. So that way it is really a successful operation so far as Jammu and Kashmir police is concerned. It's a big way that way. This is after a long time we have seen when the area has been used around Jammu city where they had tried to plant improvised explosive device. Already they had in fact information that terrorists are planning something big because there was a meeting in Pakistan where Jaish-e-Mohammed group was planning something really big, and we saw that on 26th of April Jaish-e-Mohammed suicide bombers with that suicide vest containing explosive device, they came out to this place. And today you can see right now the senior police officer SSP Chandan Kohli himself along with the SP SOG, they are there on spot. They are assessing situation, and this is the point. This is the point on the roadside. It is on the outskirts of Jammu city. This route is normally used by people moving towards hospital. You can see any given point of time the security force vehicles are also moving by. So this is a national highway. This is a national highway that leads towards Udhampur, that leads towards Jammu, Srinagar National Highway. It connects, this is a bypass route that connects towards that side. Any given point of time you'll find security force vehicle moving. So idea was basically to inflict heavy casualty. But once again, one feels like saluting these brave hearts. They got inputs, they cordoned that area. It was the timely detection and detonation of IED that they had been able to avert major tragedy here in Jammu region. And see, right now the senior officers are assessing, still they are assessing situation. Now they'll be looking for, another big task on hand will be looking for the people responsible for this IED planting. So they will be looking for those terror outfits, they will be looking for the sleeper cell, they will be looking for that module that is really working to once again target Jammu region. It's after a long time when we have seen that now you can see the traffic has been asked to move. Now this is leak. See, this is the spot. Let me show you. That is the spot where actually security agencies are working. This is the spot where IED was planting. Now the forensic team is there. They are trying to take out material. They are trying to collect evidence that will let them know what kind of explosive material was inside. But yes, short while back, when it was detonated, there was a big explosion. That big explosion clearly indicated that it contained large quantities of explosive material. Containing large quantities of explosive material means they wanted to inflict maximum casualty. मैं अभी आपको बता सकता हूं कि मैं सिद्रा रोड पर हूं. ये नेशनल हाईवे है. ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के साथ जुड़ता है. यहाँ किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देखेंगे सुरक्षा बलों की गाड़ियां मूव करती हैं. यहाँ करीब ही में बत्रा हॉस्पिटल है. यहाँ से लोग अस्पताल भी जाते हैं और देख सकते हैं कि टेररिस्ट की एक बड़ी साजिश, एक बड़ी कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है. हमने देखा है कि 22 अप्रैल को भी किस तरीके से उन्होंने जैश-ए-मोहम्मद के सुसाइड बॉम्बर जो कि साबा से इन्फिल्ट्रेट करके आए थे, सपोवाल में गाड़ी में बैठे थे, सुंजवा इलाके में गए थे. कोशिश उनकी यही थी कि आर्मी इंस्टॉलेशन को टारगेट किया जाए और इस बार भी उनकी कोशिश थी. आप देख सकते हैं सुरक्षा कर्मी, यही वो लोग हैं, यही वो बहादुर जवान है जिन्होंने इलाके को कॉर्डन किया. इमीडिएटली बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के लोग आगे. ये सिद्रा का इलाका है जहां पे आईईडी प्लांट की थी. जैसे उन्होंने तार को निकले हुए देखा, उन्हें लगा कि कोई गड़बड़ तो जरूर है. इलाके को उन्होंने घेराबंदी कर दी, किसी को भी आने नहीं दिया. अब देखिए डेटोनेट करने के बाद अब गाड़ियों की आमद रफ्त खोल दी गई है. ये वो जगह है जहां पे आप देखेंगे बुलेट प्रूफ पहने हुए बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के शख्स हैं. ये यहाँ पे फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं कि किस किस्म का एक्सप्लोसिव मटेरियल था, क्योंकि यही जगह पे डेटोनेट की गई है आईडी. देखिए बहुत बड़ा थोड़ी देर पहले धमाका हुआ. अगर आप सोचिए कि अगर ये आईडी फट जाती और यहाँ से गाड़ियां चल रही होती तो कितनी कैजुअलिटी हो सकती थी. लगातार जम्मू जो है आतंकवादियों के निशाने पर है. कश्मीर में जब वो कामयाब नहीं होते तो उनकी निगाहें जम्मू पे आ जाती हैं. जम्मू पे देखिए आतंकवादी गतिविधि करने का मतलब क्या है. आतंकवादी गतिविधि करने का मतलब यही है कि वो यहाँ पे चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो. यहाँ पे जो कम्युनल हार्मनी एग्जिस्ट कर रही है उस पे खलल पहुंचे, लोगों के बीच में लड़ाई लग जाए, हिंदू मुसलमान फसाद कर सके. तो वो यही चाहते हैं. वो चाहते हैं कि यहाँ पे कोई बैकलैश होना चाहिए. उनकी पूरी कोशिश है. अब मैं आपको दिखा सकता हूँ. देखिए यहाँ पे आप देखिए सीनियर अफसर इस समय पूरी
तरह से स्पॉट पे हैं, इलाके को अभी भी घेरा किया हुआ। हालांकि आईडी को डेटोनेट कर दिया है, बहुत बड़ी जो साजिश थी आतंकवादियों की नाकाम कर दी गई है। बहुत ही बड़ा देखिए धमाका हो सकता था। अभी थोड़ी देर पहले जब इन्होंने डेटोनेट की तब पूरी धरती हिली है, पूरी तरह से धरती हिली। आप खुद समझ सकते हैं अगर ये धमाका हो जाता, कई सुरक्षा बलों की गाड़ी जा रही होती या सिविलियन गाड़ियां जा रही होती, मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए भी आंखें खुलने चाहिए, वो सियासतदान जो अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। किस पाकिस्तान से आप बातचीत करना चाहते हो, जो एक तरफ कहता है कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और दूसरी तरफ पीठ पे छुरा घोंपता है। अब देखिए लगातार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश हो रही है। अब इंप्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस क्यों लगाया गया, वो इस वजह से क्योंकि जब कभी भी एनकाउंटर होता है तो पिछले हमने देखा है कि 26 के करीब आतंकवादी जो है मारे जा चुके हैं। इस महीने में 1 अप्रैल से मारे जा चुके हैं। जब कभी भी एनकाउंटर होता है तो हमारे सुरक्षा बलों के सामने ये आतंकवादी चाहे पाकिस्तान से हो या चाहे लोकल आतंकवादी हो, वो टिक नहीं पाते हैं। तो अब उनको लगा कि एक बेहतर तरीका यही रहेगा कि आईडी का इस्तेमाल करिए। आईडी के इस्तेमाल करने से क्या होगा कि एक तो आप आतंकवादी गतिविधि से नुकसान पहुंचा पाएंगे और दूसरा आपका नुकसान नहीं होगा। इसी वजह से आईडी को प्लांट किया जाता है। लेकिन अब बहुत बड़ी जो चीज होगी सुरक्षा बलों के सामने वो ये होगी कि ये कौन सा मॉड्यूल था, ये कौन सा स्लीपर सेल था, ये जो काम कर रहा था, उस स्लीपर सेल के बारे में पता करना है, क्योंकि काम तो अब शुरू होता है। आईडी तो डेटोनेट कर दी, नाकाम तो कर दी उनकी कोशिश धमाका करने की, नुकसान पहुंचाने की, लेकिन स्लीपर सेल को अब किस तरीके से पता करना है। आप देखिए अभी भी सुरक्षा कर्मी, पुलिस के जवान, बहादुर जवान एक बार फिर से अपनी जान हथेली पर लेकर, अपनी जान जोखिम में डाल के बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के लोगों ने देखिए किस तरीके से आईडी को डेटोनेट किया है। अगर वो टाइमली डिटेक्ट ना होती, उसे डिफ्यूज ना किया जाता, डेटोनेट ना किया जाता, तो आज यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। अब देखिए इससे पहले भी एक धमाका हुआ है। जिस दिन प्रधानमंत्री यहाँ पे 24 अप्रैल को संबोधित करने आए थे पंचायती राज दिवस, उस दिन भी सुबह 4:30 बजे के करीब एक धमाका होता है। धमाका होता है लालिया विलेज बिश्ना में, जो कि प्रधानमंत्री के वेन्यू से कुछ किलोमीटर की दूरी पर था और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी अगर आप देखें तो वो सिर्फ 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी उसमें भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसमें लग रहा है कि शायद ड्रोन के द्वारा पाकिस्तान ने आईडी वहां पे ड्रॉप की थी, जिसकी वजह से धमाका हुआ था। अड़ोस पड़ोस के गांव में जो मकान थे उनमें दरार पड़ गई थी और पूरी तरह से मकान के शीशे टूट गए थे। लोग अभी भी दहलाए हुए हैं उस इलाके में। उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। उसी दौरान जब वो इन्वेस्टिगेशन अभी चल ही रही थी, एक आईडी यहां पे मिलती है। ये सिद्रा रोड है जो कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के साथ मिलता है। यहां से अक्सर किसी भी वक्त आप देख सकते हैं सुरक्षा बलों की गाड़ियां यहां से जाती हैं। आप देखिए वो जो जगह है, मैं आपको बताता हूं, वो जो गड्ढा सा बना हुआ है वहां पे आईडी रखी गई थी, बिल्कुल यानी कि सड़क के खास पास ये रखी हुई है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। देखिए ये जो गड्ढा है, ये गड्ढा है, यहां पे आईडी रखी थी। इसके बाहर तार निकली हुई थी। पुलिस को जैसे ही पता इतला मिलती है, पुलिस इस एरिया का पूरी तरह से कॉर्डन कर देती है। वहां से भी ट्रैफिक रोक देते हैं, यहां से भी ट्रैफिक रोक देते हैं ताकि कोई आम आदमी यहां से गुजरे ना। सुरक्षा बलों की गाड़ियों को भी रोक दिया जाता है। उसके बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड आता है, जान हथेली पर लेके, अपनी जान जोखिम में डाल के बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के लोग इस आईडी को डेटोनेट करते हैं। और थोड़ी देर पहले जब उन्होंने डिफ्यूज किया उस आईडी को, तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जो कि हमारे टाइम्स ऑफ कैमरा में कैद हुआ है। वो धमाका उस वक्त तो पूरी धरती हिली। आप खुद सोच सकते हैं कि जब डिफ्यूज करने के टाइम इतना बड़ा धमाका होता है, तो अगर एक्सप्लोजन हो जाता, किसी को आईडी के बारे में पता ना चलता, तो आप खुद ब खुद समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। यानी कि ये बात तो क्लियर है कि जम्मू इज ऑन टेरर रडार। देयर आर एलिमेंट्स हु आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब पीस इन दिस रीजन. There are elements who are trying to disturb communal harmony in this region. There are elements who are trying to destabilize this region. There are elements who are trying to inflict maximum casualty because Pakistan cannot see. Pakistan एक चीज देख नहीं सकता. एक तो जम्मू कश्मीर के लोगों के चेहरे पर मुस्कान नहीं देख सकता. So the IED that has been detonated now, the Jammu police, they're swinging into action. Of course, the bomb disposal teams are also at the spot there. The entire area that is now being searched for any more such suspicions, activities that seems to be happening around there. Of course, the investigation will be launched into the same. Pradeep, for the moment, thanks very much for joining in. This is a live action that is happening there in Jammu.